आ गई। अब आप जी। अपनी हाँ आप जी, अपना आदाब, कार्ड दिखा रही नमस्ते, थी, सत प्लीज श्री कार्ड अकाल। दिखाइए जी। और आरफा मैं बताती चलूं कि ये क्रिमिनल लॉयर हैं, फैमिली लॉयर नहीं हैं। और ये हम इस पे अपने स्क्रीन पे भी हम ये नंबर और सब कुछ देंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं मैस जेफ। और ये मेरी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं इनके साथ अपनी कम्युनिटी को एक ऐसी अवेयरनेस देना चाहूँगी जहाँ पर आपको ये पता चले कि अगर कभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है तो ये कितना सीरियस है। और इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, आज मैं इनके ऑफिस में मौजूद थी तो हमने कहा कि आज क्यों ना एक और प्रोग्राम कर लिया जाए। वेलकम जेफ इन आवर रेडियो एंड टीवी साजो आवाज। Hi there. Thank you for having me. And as we were asking you the last time, I just want to continue that topic, and I want to know when husband and wife have the domestic problem, they just pick up the phone and call 911. After that, the police involved, they arrest the man or woman, or they take it, and next day they are calmed down and they said, "Oh my God, we did the mistake. I shouldn't do that." So, how serious is this offenses, and what can we do? The first thing, as we know that we did the wrong thing. Well, it's a very serious offense. Oftentimes we find in our practice, especially with recent immigrants, that they come from countries where if they have a problem at home and they call the police arrive at their house and they try to settle the situation. They try to tell one of the spouses to just simply leave the house, calm down, and then come back the next day. Unfortunately, that's not the way it works here in Canada. If someone calls the police and makes allegations of violence or threats or anything of that nature, somebody is getting arrested. Then there are consequences. Either you get released from the police station after a couple of hours, or alternatively you get held overnight for what they call a bail hearing. Either way, you're going to be released from custody with certain restrictions. Some of those typical restrictions are not allowed to have any communication directly or indirectly with your spouse. You're not going to be allowed to have communication directly or indirectly, possibly with your children. You're not going to be allowed to go back to your home. You're going to have to stay away, let's say 200 meters from anywhere your spouse is known to be. The short version is that there are a lot of consequences to your everyday life. So it's not so simple to wake up the next morning and say, oops, I made a mistake. I didn't intend for any of these things to happen. और इसी तरीके से ये बताना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका रिपेयर नहीं होता। तो अगर आपने 911 को कॉल करके इन्वॉल्व कर लिया और घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आपने फ़ोन फेंक के मारा, कोई गिलास फेंक के मार दिया, कोई कप फेंक के मार दिया, तो वो वेपन्स तस्वुर किए जाते हैं। और इस तरीके से जब कभी आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको एक सीरियस डिफेंस लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि हमने कहा कि जेफ एक डिफेंस लॉयर हैं, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं। और एक लॉयर के पास जब आते हैं तो ना सिर्फ वो आपको बचाता है, बल्कि वो कोशिश ये करता है कि फर्ज कीजिए हो सकता है आप यहाँ पर रेफ्यूजी हो, अब आपका इस क्रिमिनल की वजह से आपका डेपुटेशन हो सकता है। और अगर डेपुटेशन हो सकता है तो कितनी सीरियस बात है कि आप अपनी जिंदगी की सारी कश्तियां जला के कहीं से भी यहाँ आए, अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारने के लिए अपने पार्टनर को साथ में लेकर आए और यहाँ के लॉ के मुताबिक आपकी लड़ाई में एक सीरियसनेस आ गई। तो ये चीजें आपने समझना है और आपको एक शदीद सीरियस लॉयर की जरूरत होती है जो आपको इन सारी बातों से बचा सके। एंड जेफ, आई वांट टू आस्क यू that when we say that sexual assault, it is a big thing in our mind, but I heard that people touch in a buses, or let's say that men are very close to the woman or touch or want to just do something, and it's the police involved and they say domestic violence. How serious is the domestic violence, and what is the criteria for the defense for the sexual assault? Sexual assault is also a very serious charge. And any sexual assault essentially is defined as any unwanted touch with a sexual connotation to it. So any type of sexual interference, could be with young people, could be with adults, any type of unwanted touch in a sexual manner is considered to be sexual assault. This is serious too? And that's a very serious charge. People go to jail for these things. People can get deported for these things. If you are convicted of such a charge, you end up on what's called a SWARA, which is the Sexual Offenders Registry. It's obviously a very bad list to be on. And they stay in a book, the criminally sexual assaulted person. You can be on this sexual offenders list for 10 years. 10 years. And the police keep tabs on you.
ओह! तो जब भी कभी हम कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट में कोई बहुत ही घिनौनी आपने हरकत की है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी कोई नहीं चाहता और अगर आपने उसको टच कर दिया जैसे कहा गया अनवांटेड टच, तो अगर आपने किसी को ऐसा किया और उसने पुलिस कॉल कर ली तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हालात में आते हैं और जिस जिस बैकग्राउंड से हम ताल्लुक रखते हैं, वहाँ हम लोग इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते कि अगर किसी ने बात करते हुए हाथ पकड़ लिया या एक थोड़ा-सा थप्पड़ लगा दिया या गाल पकड़ लिए या अगर कुछ ये लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया तो ये भी सेक्सुअल असॉल्ट में आ सकता है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझना होता है, अवेयरनेस चाहिए एंड वन थिंग आई हर्ड that even though when husband and wife they are married they are allowed to do all these sexual activities and everything, but I heard that sometime when the police appear at the door and they arrest the husband, they said that he is charged with the domestic violence and the sexual assault. What is that? Again, that's a similar scenario, because even though, taking the example of a married couple, you could still be charged with sexual assault. Here in Canada, a husband is not entitled to have sexual relations with his wife. If his wife says no, then no means no. And if she decides to turn around and call the police, he's going to get charged with sexual assault, regardless of the fact that he's husband and wife and they're married. ओके सो इसका मकसद ये है कि हर हालत में आपको विलिंगनेस चाहिए होती है, आपको परमिशन चाहिए होती है कि अगर आप किसी के साथ हो और अगर वो गुस्से में है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आप ज़बरदस्ती उसको पकड़ रहे हो, हक कर रहे हो, गले से लगा रहे हो, ये भी नामुमकिन है कि आप ऐसा ज़बरदस्ती कर सको। ये भी एक सेक्सुअल असॉल्ट के ज़मरे में आता है। लिहाजा जो हमारी कम्युनिटी को चाहिए अवेयरनेस चाहिए कि हमें कितना डिस्टेंस रखना है अपनी ज़िंदगी को सेफ रखने के लिए, कितना डिस्टेंस रखना है कि अगर एक औरत नहीं चाहती कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती बात करें तो ये भी आपको नहीं करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें आइंदा भी हम प्रोग्रामों में जेफ को लाते रहेंगे। जेफ, एनीथिंग यू वांट टू ऐड दैट हाउ मच मीन्स दैट व्हेन पीपल डू सम स्टूपिड थिंग और सम they don't know the seriousness, how much money is involved, how much seriousness that the family will be separated. Just last few words I want to know that what is the consequence, you have the experience with that. Yeah, well, there's a lot of very serious consequences to these things. That's why it's very important to get a trusted legal representative who can help you out of this situation. There's a lot of stress surrounding these types of charges. It creates a lot of anxiety. Families get separated. Husbands, wives can't see their children. There's a lot of consequences if this doesn't go well. That's why you need somebody who's trusted on your side, who can help you through the process, and also who charge reasonable rates, because at the end of the day, it still is about money, and you don't want to have to refinance your house or risk losing your house just to pay for a lawyer to try to help you out. That's why we charge reasonable rates, so that we could try to help as many people as possible. और जैसे कि जेफ ने बताया कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, घर बिगड़ जाते हैं और उसके बाद जब ज़ाहिर है कि आपका घर बिगड़ता है तो आपका घर भी बिकेगा, आपकी चीज़ें भी बिकेंगी। दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड जब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक पार्टनर ने अगर पुलिस कॉल कर ली तो ये कोई बहुत ही लविंग कोई एक्ट नहीं है। लाज़मी बात है जब पुलिस आ गई, बहुत सीरियसनेस हुआ, उसके घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, मर्द हो या औरत हो, और ये चीज़ें चली जाती हैं, फिर आपकी अलहदगी पे, आपकी डिवोर्स की तरफ चली जाती हैं। और जब आप वहाँ पर जाके डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से जब चीज़ें सीरियस होती हैं, आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है और लॉयर आपको इतना महंगा पड़ सकता है कि आपको अपनी जान छुटाना मुश्किल हो सकती है। और जैसे कि हम कहते हैं कि जेफ मैस एक बहुत ही रीजनेबल लॉयर है और एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से ये हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हमारे सरकमस्टांसेस समझते हैं, हमारी जो इनकम है उसकी वैल्यूज़ को समझते हैं। और जब आप आते हैं और जब मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ तो न सिर्फ आपको ये एक बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है कि आपको ठीक अच्छे से रीजनेबल तरीके से ट्रीट किया जाता है, बल्कि अगर आप वेबसाइट पे जाके जेफ का मैस का अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस रेट 97%। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर जेफ कि मैं इनके साथ काम करती हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी में एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लॉयर लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ अपने काम को करता है बल्कि ऑनेस्ट है और वेरी डेडिकेटेड है अपने काम के साथ, पैशनेट है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती है। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव हिम एंड आई कैन
bring him on the TV or radio, हम आपकी ज़बान में आपको समझा सकते हैं कि ये चार्जेस कितने सीरियस होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। 416-570-0157 में आपकी अपनी अंजुम कुरैशी कोशिश की कि आपको एक ऐसी अवेयरनेस दे सकूं जो कि बहुत सीरियस मैटर को लेकर चलती है, और इस सीरियस मैटर को आपने भी सीरियस लेना है। एंड थैंक यू वेरी मच जेफ, and we'll have next program on the same topic but in a different scenarios. Thank you so much. Certainly. Thank you very much for having me.